this is not a clickbait. I am soon moving to morning, welcome to a new vlog. I have been vlogging so much recently and I'm loving it. Now as you saw, I just woke up. I woke up at around 8 and I have to make my bed right now. Also it's like very gloomy outside today. आजकल कुछ दिनों से काफी धूप सी और एक थोड़ा सा गर्म सा होने लग गया था. But today it is a very overcast, gloomy kind of a day. I have been pretty consistent with my workout like in the past couple of months and I don't want to jinx it, but I have been seeing some results and it's amazing. And I'm ready. This is like such a basic workout outfit that I mostly wear. I wash it and then I wear it again because I love both these pieces so much. Now this is your motivation to get up and get a workout in today. Picnic with my best friends. We start to plan what we will do. Now life's back in color and everything's feeling brand new. So I just completed my cycling. मैंने 20 minutes cycling कर दी and now I have seen this new workout जो Grow with Jo ने डाला है, which is her best 20-minute home back workout with dumbbells, and I'm thinking I'll do that today. This is the workout that I just talked about. Also, I think I've talked about Grow with Jo a lot of times in the past. I love her workouts. Her and Chloe Ting's workout are my go-tos for like I read that the French always say what's on their mind, leaving lipstick stains on tall glasses of wine. Practically invented being nonchalant for fun. They tear apart Voltaire just like afternoon croissants, strolling over bridges that were built in Renaissance. Isn't that what every romance loving 20-something woman wants? Good morning, guys. पता है my mom and my parents are going to Goa, and she's packing for that. हाँ, Goa and Bangalore. She's going to. वाली vibes आ रही हैं इसमें. बिल्कुल गोवा वाली vibes आ रही हैं. और पता है ये वाला जो सूट है ना, this is so pretty. I love this suit. इतना beautiful work है ना इसमें. Like it's got chicankari and then mirror work as well. And आजकल ना मुझे mirror work बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों. इसके साथ इसका bottom भी है. And let me show you one more thing. मम्मी गोवा वाली वाइब्स इसमें भी हैं. She got this beige like salmon pink beige sort of pants from Westside, and ये इतनी अच्छी है ना. Like I really like them. Do you remember I have like similar piece from H&M, like pants है H&M के, ये वैसा ही कुछ है. And she got this kurta. ये कुर्ता भी काफी अच्छा. Let me show you the kurta. खोल दो. प्रेस करी होगी ना आपने. She'll kill me after the video. अभी तो वो बोल रही है खोल दे. ये काफी अच्छा है यार. दिस इज लाइक रियली प्रीटी. शी गॉट, और ये बहुत सस्ता मिला, पता है मम्मी को लाइक 500 में मिल गया था. इट वाज सच अ गुड डील. सो मम्मी की गोवा की तैयारियां हो रही हैं. ऑल्सो दिस इज सच अ क्यूट बैग ना. वी गॉट दिस फ्रॉम मिनीसो रिसेंटली एंड वो मिनीसो हॉल में बहुत जल्दी चैनल पे आ जाएगा. आई गॉट अ लॉट ऑफ क्यूट स्टफ फ्रॉम देयर. एंड मम्मी ये वही वाले फुटवेयर जो आपने मिंत्रा से लिए थे. हाँ, कैसे लग रहे महीने ले जाओ. हाँ ले जाओ. आई एम व्लॉगिंग इन दिस रूम आफ्टर सो लॉन्ग गाइस. माई ओल्ड रूम. कितने टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ मैं यहाँ पर. एंड नाउ आई एम सो हंग्री. आई हैव टू टेक अ बाथ एज वेल एंड ब्रेकफास्ट भी करना है. सो लेट मी गो मेक सम ब्रेकफास्ट ऑल्सो. हाय बोलो चाचा सबको. हाय बच्चों. Time to get ready. So I'm thinking I'll try this beauty blender today. Now if you remember, ये मैंने Amazon से लिया था. I think I showed you in some haul or some vlog in the past, and I told you that we'll try this together. But उसके बाद से मैं भूल ही गई पता है इसके बारे में. And I saw this in my desk today. I was cleaning like my drawer, my makeup drawer. और मुझे उसमें दिखा. I was like, fuck, I totally forgot about it. So long story short, let's try this new beauty blender today. This was like pretty inexpensive. I think 100 something ka tha, which is very cheap for a beauty blenders. These kind of things can be really expensive. So I am very intrigued to see कि ये कैसा होगा, and if it is good, then I'll definitely link it in the description for you.
let me quickly go damp this a little because you have to like wet your beauty blender before using them. So wait 1 second. And I'm back. So it has like literally almost doubled in size. And लग तो मुझे काफी soft सा ही रहा है. I think I'll mix the Fit Me one with my trusty Wet n Wild foundation. I'll mix both these shades together. A pump of Fit Me, then some Wet n Wild one. See, this one is a little light for me, तो इनको साथ में mix करके ना, it like the shade is perfect. I look so weird. So, moment of truth. Let's see. Let me blend this. Wow, did you see how seamlessly this blended? ये किस brand का है यार? I'm not even sure. Like, guys, it's not a sponsored video. First of all, I'm not even sure ये किस brand का है actually. इसमें ऐसा Queen Bird कुछ लिखा हुआ है, but is that a brand? I don't know. But so far I'm liking it. Like, I won't cut this video now. मैं fast forward करूँगी. You just see how quickly this is blending the foundation. Wow. I think it did an amazing job. Like काफी seamlessly blend हुआ. If you can see, this does absorb a lot of product, but I like it. ये काफी soft भी है actually. चलो, let's try to see ये concealer को कैसे blend करेगा. Concealer करके देखते हैं इसी से. Again, I won't cut it. I won't fast forward it ताकि आप real time पे देख पाओ. Okay, wow. I love this beauty blender. Before we move on further, let's talk about the reason that you clicked on this video, which is the title. Now, where am I moving on to? What is happening? This is not a clickbait, guys. I'm actually moving to Noida for a couple of months. So one of my friends, उसका work from home खत्म हो रहा है, and she has to move back because of her work. And I thought कि I'll also like go with her and live in Noida for a few like weeks, or like I think till April में वहाँ पे रहूँगी. So I thought कि I'll like have a change of scenery and वहाँ पे थोड़ा different content बन पाएगा. And I'm so excited to go back to Sarojini. So I think we'll be traveling to Noida on either 5th or 6th of March. उससे पहले obviously packing वगैरह बहुत सारी चीजें होंगी, and you'll be involved in the entire process. मैं ट्राई करूंगी कि मैं सब कुछ व्लॉग करूं. आई थिंक मैंने 4-5 वीडियोस तो प्री फिल्म कर रही है मार्च के लिए, बिकॉज आई वांट कि वहाँ पे भी मैं करती रहूँ, बट मुझे पता नहीं कि वहाँ पे मैं कितना फिल्म कर पाऊंगी, स्पेशली सिट डाउन वीडियोस. तो मैं थोड़ा सा सिट डाउन वीडियोस प्री फिल्म कर रही हूँ. तो अगर आपको अगले 1-1.5 महीने में इस घर की भी वीडियो दिखेंगी तो जस्ट रिमेंबर कि वो प्री फिल्म ऑलरेडी. एंड वहाँ पे भी आई ट्राई कि मैं काफ़ी कंटेंट आप लोग के लिए बनाते रहूँ. एंड आई एम सो एक्साइटेड. आई एम एक्साइटेड फॉर द चेंज ऑफ सीनरी. एंड नाउ आई हैव टू शूट वन मोर वीडियो. मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शूट कर ली, अभी सुबह करी थी, जिसके लिए मैंने सब मेकअप किया था ऑब्वियसली. एंड नाउ आई हैव टू शूट वन मोर वीडियो. आई एम टेलिंग, आई एम प्री फिल्मिंग सो मच कंटेंट ना, ताकि वहाँ पे जाके एटलीस्ट स्टार्टिंग की 3-4 वीडियोस मार्च की तो मुझे फिल्म चाहिए. एंड हो ही गई है सारी फिल्म. एक व्लॉग फिल्म करना, लाइक जो आगे फिल्म होगा वही बचा है, बाकी तो सब कुछ फिल्म हो गया. और मैंने मार्च एंड के लिए भी 1-2 वीडियोस फिल्म करी हैं. सो आई एम ट्राइंग कि प्री फिल्म लॉट ऑफ कंटेंट, ताकि अगर मैं वहाँ पे कभी नहीं कर पाई काम, बिकॉज आई नो आई विल बी बिजी देयर, तो मेरे पास वीडियो रेडी रहे. सो आई विल गो नाउ, फिल्म अ वीडियो एंड देन सी यू. So it's a day full of trying new things. मैंने ना recently momos देखे थे in a local grocery store, and I'm thinking let's try these today. I'm feeling hungry now, so let's make this for lunch. Now I'll steam them for 3 minutes and then I'll give you a taste test. And the momos are steamed now. Sadly, momo की चटनी नहीं है, so I think I'll have this with sriracha.
थोड़ा सा, एंड दिस मोमो सॉस जो कि प्रसुमा मोमोज के साथ आता है। आई हैव फ्यू एक्स्ट्रा ऑफ दीज। यार लेकिन मोमो की चटनी के बिना मजे नहीं आएंगे, आई हैव अ फीलिंग, क्योंकि मोमो की चटनी इज द मेन थिंग फॉर मोमोज। बट ठीक है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फन फैक्ट, आई लव मोमोज, लाइक आई कैन ईट मोमोज एवरी डे। इनको ट्राई करते हैं। 3 तो हो गए हैं। आई ट्राई इट विद द श्रीराचा फर्स्ट। They're alright, they're quite salty, but I like the Prasuma ones more. उसका feeling ना बहुत buttery सा होता है. Now I'll go and share these with my brother, and I'll see you in a while. So I recently bought this new drink from grocery store, and I thought, let's try it together. Taste test time. I think this video is full of like a bunch of different testing out new things. So ये ना एलो फ्रूट का कोई ब्रांड है, नॉट स्पॉन्सर्ड, दे डोंट इवन नो आई एग्जिस्ट, बट उसमें ना मुझे ग्रोसरी स्टोर में ज़्यादा जिसकी पैकेजिंग एक्चुअली बहुत क्यूट लगी। एंड देन ब्लड ऑरेंज मोहितो, नाम भी काफ़ी इंट्रिगिंग है। सो आई थॉट लेट्स ट्राई इट, एंड मैं व्लॉग करी थी, मैंने सोचा चलो व्लॉग में ही ट्राई कर लेते हैं। नाउ दिस वन वाज फॉर 65 रुपीज़, सो आई होप इट्स लाइक गुड टेस्ट में। चीयर्स। Okay, this has soda, and fun fact, I don't like anything जिसमें soda हो या फिर fizzy हो या aerated हो. I don't know, it just feels so weird while drinking it. So I personally don't drink anything which is carbonated. Taste wise, it's decent. मतलब ऑरेंज का इसमें हिंट है, देयर इज अ हिंट ऑफ ऑरेंज, बट बहुत हल्का सा टेस्ट है। इट्स नॉट समथिंग दैट आई विल रीपर्चेज लाइक ये फ्लेवर स्पेसिफिकली, बट ये वाला मैं खत्म कर लूँगी। इट्स नॉट टू बैड कि पी नहीं सकते, ठीक ठाक सा है, एवरेज सा ही टेस्ट है। ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट दिस इज द नेक्स्ट डे। मैंने कल रात को बहुत लेट तक काम किया था। आई वाज शूटिंग टिल लाइक 8 और समथिंग। उसके बाद आई वाज सो टायर्ड, मैं भूल ही गई ब्लॉग करना। सो दिस इज द नेक्स्ट डे, इट्स अ संडे टुडे, 27 है आज की डेट। सो आई वॉन्ट कि यहाँ से जाने से पहले मैं एक बार एक और ड्रॉप कर लूँ डीज क्लोजेट का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया एंड आई हैव बीन गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम यू गाइस कि अगला ड्रॉप कब आएगा दीक्षिता। तो आई एम थिंकिंग कि आज शूट करके कल होपफुल एंड 28 को या 1st को ड्रॉप कर दूंगी। मुझे एक्चुअली ये चीज़ करनी थी 2 दिन पहले, बट नॉट गोना लाई, आई एंडेड अप स्पेंडिंग द एंटायर डे बिंज वॉचिंग। उस दिन मेरे को मन ही नहीं किया काम करने का। और ऑल ऑफ अस आर डेड इज़ अ न्यू कोरियन शो जो कि नेटफ्लिक्स में टॉप में चल रहा है, तो वो इतने टाइम से टॉप में था तो मैं सब वो देख लेती हूँ। सो आई लिटरली लाइक बिंज वॉच द एंटायर शो। डू टेल मी इन द कॉमेंट्स आपने देखा है या नहीं देखा है, एंड इट इज़ अ गुड शो इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। इट इज़ वर्थ द हाइप। उसकी बहुत हाइप हो चुकी है, लाइक इतनी सारी तारीफ सुन ली थी मैंने, एंड इट इज़ वर्थ इट। काफ़ी अच्छा शो है, एंड कोरियंस एंड देयर ज़ॉम्बी लाइक मूवीज एंड फिल्म्स आर ऑलवेज द बेस्ट। मैंने ट्रेन टू बुसान देखी है और एक अवेक करके एक मूवी है वो भी देखी थी, तो कोरियन की ज़ॉम्बी वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। एंड आई पर्सनली लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद कोरियन इंडस्ट्री, कोरियन ड्रामाज। आई थिंक मैं यहाँ पे उतनी बात नहीं करती तो आप लोग को पता नहीं होगा, बट आई एम ऑब्सेस्ड विद के ड्रामाज। डू टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू ऑल्सो वॉच के ड्रामाज, एंड आपका फेवरेट शो कौन सा है, आपने सबसे रिसेंटली कौन सा के ड्रामा देखा है, कमेंट्स बताओ। गिव मी रिकमेंडेशन, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर रिकमेंडेशंस फॉर के ड्रामाज, एंड इफ यू वांट मी टू लाइक मेक अ वीडियो ऑन सम ऑफ माय फेवरेट ड्रामाज ना, tell me in the comments. Oh wait, before I start the shoot and get out of these clothes, let me show you my OOTD. So I'm wearing this like really pretty black जो कि मैंने Shein से लिया है। इसमें इसकी डिटेलिंग समझ नहीं आ रही, बट इसकी स्लीव्स लाइक बहुत अच्छी सी मैश की स्लीव्स है, फुल स्लीव्स है, बहुत प्रिटी सा, इट्स लाइक अ वेरी फिटेड टॉप। तो मैंने इसको अपनी ट्रस्टी H&M जीन्स का पहना है। आई एम वेयरिंग दीज जीन्स सो मच ना, लाइक लिटरली हर दूसरे दिन मैं यही पहन लेती हूँ, इतनी कंफर्टेबल है। एंड ये थोड़ा सा मेरे को वेस्ट से लूज होने लग गई है बिकॉज आई एम लाइक वर्किंग आउट कंसिस्टेंटली दीज डेज, तो थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है अपनी बॉडी पे, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। एंड उसके ऊपर से मैंने श्रग पहना हुआ है, एंड दिस इज टुडेज OOTD। I am like really liking this outfit. कितना fun, कितना casual सा outfit है. And now let's start the They work. tear apart Voltaire just like afternoon croissants, strolling over bridges that were built in Renaissance. Isn't that what every romance loving 20-something woman wants? Midnight in I've always heard there's magic in the air as you're watching people dance by sand. Midnight in Paris, oh what a feeling. Steps on cobblestones, thinking this must be La Vie en Rose. Wow,
There was a lot of work. मैंने सारी pictures वगैरह ले ली हैं. I think if you saw the last वाला जो time lapse है, तो some of the pictures that I took on the clothing rack ना, I don't know why, but उनका color like lighting बहुत ही weird आ गई है. So now I have to sit and color correct them. तो अगले 1-2 घंटे में वही करने वाली हूँ. हाँ पापा, एक सेकेंड. ओह अच्छी लग रही है. वाह ये काफी अच्छी लग रही है. ये गोवा ट्रिप की प्रिपरेशन चल रही है. अच्छी लग रही है काफी. आप पहनो फिर मैं भी चोरी कर लूंगी आपसे. ओ माय गॉड आई लुक सो बैड. थैंक यू सो मच मुझे ऐसे गंदी सी हालत में झेलने के लिए. बाय. So where you wanna go? Let's see it all. Selfies on the Great Wall, maybe the Taj Mahal. Hey, we could stay out late after dark. Take a gamble in Monaco. We could swim with the sharks.